Okay, good evening, everyone. So, Safur is from Bhubaneswar. Okay, I hope I'm pronouncing your name correctly. Uh, okay, Prisha is from Delhi. Perfect. And Sonam is from Bhubaneswar. All right. Okay, so good evening again. And we are going to start with the 10th chapter. This is from your physics portion, right? So the chapter name is gravitation, and I hope you may have some idea about gravitation chapter. You may have learned about this particular topic in seventh standard and in eighth standard as well, right? So we'll just brush up the things that you have learned, and we'll learn some advanced things as well. So let me just start with first paragraph in chapter 8 and 9. We have learned about the motion of objects and force as the cause of motion. We have learned that forces need to change the speed or direction of the motion of an object. So, I guess your chapter number 8 is about motion and chapter number 9 is about force, right? So, unfortunately, I was not there to teach you. So, uh, I'm not very sure whether it is even covered or not, right? आपका chapter number 8 or 9 हो चुका है first sem students? Can you please confirm? Is chapter number 8 and 9 has been completed? No, I'm not talking about our classes itself. Yeah, yeah. अगर स्कूल में भी हुआ है then also okay. So that means you have studied that, right? अगर क्लास में नहीं हुआ है that is okay. But if स्कूल में हुआ है, okay. So स्कूल में हो चुका है, right? So आपने उस चैप्टर नंबर 8 में और 9 में मोशन और फोर्स के बारे में सीखा, right? So what is motion? We have learned that a force is needed to change speed or the direction of motion of an object. So we always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun, the moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the objects, the planets and the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called gravitational force, and we are going to learn about gravity itself, right? So who has discovered gravity? So it is obviously Isaac Newton. Everybody knows that, right? So we are going to know the concept and how the scientist, that is Isaac Newton, discovered that gravity. Okay, and so we are going to learn about formulas and mathematical calculations and as well. Okay, so in this chapter we shall learn about gravitation, the universal law of gravitation. We shall discuss the motion of objects under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of body varies from place to place, and we shall also discuss the conditions under which objects move. Okay, so these are the things that we are going to learn here. So I don't know if you know this or whether you know this or not. So your weight on earth, your weight on moon, and your weight on Mars will not be same. Do you know that? Do you know this fact? आपका जो वेट है, लेट अस सपोज योर वेट इज 40 kg और 50 kg और 60 kg, वॉट एवर इट मे बी, राइट? सो अगर आपका अर्थ पे वेट इतना है, सो मून पे कुछ अलग रहेगा, मार्स पे कुछ अलग रहेगा. एंड इफ इन केस you are able to land on, let us say, Jupiter is a gas giant. We cannot land on it, right? There's no hard surface, there's only gases. I hope you know that. So वहां पे कुछ अलग रहेगा, right? So why does that happen? ये भी हमें सीखना है. Before that, I just wanted to ask a small question to all of you. How many of you have seen the partial solar eclipse yesterday? How many of you have seen, or how many of you have at least seen the photographs that were shared on the group? Have you seen live or the photographs? Please comment down. आपने जो कल सूर्य ग्रहण था या फिर सोलर इक्लिप्स था, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, क्या वो आपने देखा है? अगर देखा है तो आपने लाइव देखा है या फिर फोटोज में देखा है? क्या आप तीनों लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे प्लीज?
Sonam, Prisha, Safio. Okay, yes, you in photos, all right. ठीक है, नेकेड आइज से वैसे भी हम देख भी नहीं सकते, वी नीड टू हैव समथिंग टू वॉच दैट सोलर इक्लिप्स। ओके, बाकी दो लोगों ने आंसर नहीं दिया है, दैट मीन्स दे माइट नॉट हैव सीन, नो प्रॉब्लम। ओके, यस, इन planetarium. Okay, okay, good, great. All right. So let's start with gravitation. Now we all know that the moon goes around the earth. An object, when thrown upwards, reaches a certain height and then falls downwards. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. तो ये स्टोरी तो आप सबने सुनी होगी, राइट? कि हाउ द ग्रेविटी वाज फाउंड। सो लाइक जब मैं व्हेन आई वाज इन फिफ्थ एंड सिक्स स्टैंडर्ड ना, सो मैं क्या सोचता था कि लाइक न्यूटन सैट अंडर अ ट्री, एप्पल के ट्री के नीचे नीचे न्यूटन बैठ गए और उनके ऊपर एक एप्पल जो है वो उनके ऊपर गिरा, राइट? एंड देन दे डिस्कवर्ड लाइक देयर इज ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये जो एप्पल है ये नीचे गिरा। सो आई थॉट, मतलब आई यूज टू थिंक कि उन्होंने सिर्फ उसे नाम दिया है, लाइक ये जो एप्पल नीचे गिर रहा है ये गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, राइट? मतलब बहुत ही लाइक मतलब थोड़ा सा सिंपल करके मैं अपने आप को समझाता था कि अरे यार ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी फाइंड आउट करना तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, लाइक सिर्फ नीचे गिरा है तो उसको उन्होंने ग्रेविटी का नाम दे दिया। बट दैट वाज डेफिनेटली नॉट द केस। व्हाट इज ग्रेविटी, अभी हम लोग सीखेंगे कि उन्होंने क्या फाइंड आउट किया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये जो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा है वो ग्रेविटी की वजह से गिरा है। दे गेव लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक प्रूफ्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम लोग वो चीजें सीखेंगे। लेकिन जब मैं छोटा था ना तो मुझे इतना लाइक पता नहीं था कि ये सब कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, स्पेशली इन फिफ्थ एंड सिक्स स्टैंडर्ड्स। सो जैसे जैसे मतलब बड़े स्टैंडर्ड्स में आया, सो ये सारी चीजें पता चली। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द इंसिडेंट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। Okay, so where were we? So Isaac Newton were sat under he. Okay, somebody is trying to join. Sharanjit Kaur it is. Okay. Okay, so where were we, students? It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of apple made Newton start thinking. He thought that if Earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is the same force in both cases. He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in straight line. So it must be attracted by earth, but we do not really see moon falling towards the earth. Right? So we all know that moon is also under influence of earth's gravity, राइट? सो अगर एप्पल, जो एप्पल है पेड़ पे, वो अगर हमारे अर्थ पे गिर सकता है, सो व्हाई नॉट मून? मून क्यों नहीं गिर रहा है, राइट? वो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। एंड व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट? विल सी। Let us try to understand the motion of moon by recalling activity 8.11. So unfortunately I was not there to teach you chapter 8, but you may have done this activity already, so that's why the reference is given here. So the activity is, what we have to do is, you can do this at your home, not now, maybe tomorrow morning, or you may have already done it. You have to take a piece of thread and you have to tie a small stone at one end and hold the other end, and we have to whirl it round. Okay, so note that the motion of stone, now in this state, जब हम उसको घुमाएंगे, so the motion of stone will be in circular direction, और उस थ्रेड को पकड़ के उस स्टोन को घुमाना है, and we have to release the thread from our hand. So what will happen? The stone will go in a straight direction. आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सी यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है, बॉय है, whoever it is, he has held
the string in his hand, and the stone is tied here, and he's whirling it, या फिर वो उसको घुमा रहा है, right? And when he'll leave the when he'll release that thread, the stone will go away in straight direction. It will not keep moving in the circular path, right? Earlier it was moving, but it will not. Why? See, before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. ठीक है, मतलब जो सर्कुलर पाथ है उसमें एवरी पॉइंट पे the stone is changing its direction. I hope you can imagine this. So the changes in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. This force is called centripetal, meaning central seeking force. ठीक है, so in the absence of this force, the stone flies off along a straight line. The straight line will be the tangent to the circular path. Now हमने स्ट्रिंग से उस स्टोन को बांध रखा है, हम उसे घुमा रहे हैं, एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई भी अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम पिकअप करें तो उस पे वो जो स्टोन है, stone is changing its direction. That means the acceleration is changing. Okay, and that force is, pulling that stone, or it is keeping that stone towards the center, and this force is called as centripetal force, or it is also called as center seeking force, right? So the same force applies in case of earth and moon. This straight line will be tangent to the circular path. I hope you know what is tangent, right? So in this figure it is already shown there is a circle and there is a line touching only at one point. Line AB is touching the point, the circle at point B, only one point, one and only one point. So the line AC will be called tangent to that circle, right? So similarly, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, सो इन दैट केस जो उस स्टोन की डायरेक्शन होगी या फिर जो मून की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, नॉट टू द अर्थ. अर्थ को टेंजेंट नहीं रहेगा, दैट विल बी टू द जो उस पाथ, जो सर्कुलर पाथ में मून ट्रैवल कर रहा है या फिर मून घूम रहा है या फिर जो स्टोन इट वाज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, the direction will be tangent to that, right? So the motion of the moon around the earth is due to the centripetal force only. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line. So even though there is no string, there's no physical string between earth and moon, but still there is centripetal force between them. Okay, so it is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards the apple. Why? तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट? अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, सो व्हाई एप्पल इज नॉट अट्रैक्टिंग द अर्थ? मतलब अर्थ ने थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए सो दैट द एप्पल टचेस द ग्राउंड. ठीक है, सो दैट वाज वन ऑफ द आइडिया. नाउ why this is not possible? So according to the third law of motion, the apple does not attract the earth, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. Acceleration is inversely proportional to the mass of an object. The mass of apple is negligibly small compared to that of the earth. So we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. ठीक है, सो इस तरीके से एप्पल का जो मास है या फिर हमारे मून का भी जो इवन मास है, दैट इज वेरी लेस, और इट इज, अगर हम स्पेशली एप्पल की बात करें, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू द अर्थ. इट इज नथिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई earth will not move towards the apple, but apple will move towards the earth. ठीक है, so students, it has been almost
18 minutes since we started, and few students are joining now, so it's quite late. Shweta and Sharanjit, you have joined quite late. I would request you to please join on time from next class. Okay, so what happens is आप कुछ topics miss कर जाते हो, so then you cannot, link नहीं लग जाता, link नहीं लग पाता है. So I would request every one of you, not for one or two students, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी हमारा क्लास हो, मोस्टली हमारा क्लास फ्राइडे को रहेगा, सो एवरीवन प्लीज 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 बी इन द क्लास एटलीस्ट 2 to 3 minutes बिफोर द स्टार्ट टाइम. ठीक है, 8 बजे का क्लास है, तो आप 7:57, 7:56 को क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. इवन 7:55 को भी ज्वाइन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मैं 7:55 को ही ऑलमोस्ट करता हूँ. ठीक है, ओके. सो जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कुछ भी मैं इन 20 मिनट में बोल रहा हूँ, so are you understanding it or is it becoming too fast? I just wanted to know from you students. Is it I'm going with good pace और कुछ समझने में दिक्कत है? If yes, you can let me know. We can try at some different method. Understanding well, okay? All good, perfect. ठीक है. What about others? Okay. I am very happy to see your responses in the chat box. Please be responsive like this. Okay, so in our solar system, all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. This is force of attraction between objects is called the gravitational force. Now see, जब हम gravity की बात करते हैं, we say that earth has gravitational force or earth has gravity, right? So it is not the case. Earth attracts apple as well as moon, right? In the similar fashion, sun attracts every other planet. अगर हम किसी और planet की बात करें, let us suppose Jupiter has a number of moons, Saturn has number of moons, so they also attract their moons, right? So इसका मतलब gravity or gravitational force is not limited to earth, apple and moon. It works everywhere in the universe. I'm talking about the universe. Okay, so what Newton concluded? Newton concluded that all objects in the universe attract each other. Now remember this line, underline this line. All objects in the universe attract each other. Now if I give you an activity, you must be having a phone in hand, your phone in your hand, right? And in other hand, maybe you will be having a notebook or a pen. So these two objects are also attracting each other. Okay, even though they are not traveling towards each other. तो आप तो कहोगे सर, अगर मेरा फोन और अगर मेरा नोटबुक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, सो व्हाई दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर? तो इसका जो रीजन है, ये आपको पता चलेगा इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो इट शुड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, इजंट इट? न्यूटन ने तो बोला है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, बट व्हाई सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड मी आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर? इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें मिल जाएगा, बट फॉर नाउ जस्ट कीप दिस सेंटेंस इन योर माइंड. All objects in the universe attracts each other or attract each other. This force of attraction between the objects. अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो किसी ना किसी फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे होंगे. सो दैट फोर्स, द फोर्स of attraction between objects is called gravitational force. Okay, what is the difference between capital G and small g? Very good question, but I would say it is very early for me to explain these concepts, capital G and small g. Okay, so will
I think capital G is universal gravitational constant, and small g is acceleration due to gravitational force, maybe, right? So we'll discuss both of this constant in very deep manner. We'll solve examples on them, but not just now. जब भी हमारे चैप्टर में ये टॉपिक आएगा, we'll discuss about it. If you have any queries, we can resolve that queries as well. So I would say this question is quite early. We'll discuss that question later on if you are okay with it, right? Chalo. So now the main topics start. Universal law of gravitation. Every object in the universe attract every object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. Now, very important definition. It seems to be lengthy, but I don't think it is lengthy. There are 3 points to be remembered. First point is the force or the gravitational force is proportional to the product of their masses. मतलब अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके masses का जो प्रोडक्ट रहेगा that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, तो अभी देख लो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हैं. दिस सर्कल वन, लेट्स सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी. तो ऑब्जेक्ट ए का मास मान लीजिए कैपिटल एम है, ऑब्जेक्ट बी का मास मान लीजिए स्मॉल एम है. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, right, and inversely proportional to distance between them. And the third thing that we need to remember is the force is along the line joining the circles of two objects, joining the centers of two objects. ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर है उस पे उसके बीच में अगर हमने एक लाइन खींच दी, सो दैट विल बी द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, राइट. नाउ the gravitational force between two uniform objects is directed along the line joining their centers. Let object A and B of masses capital M and small m lie at the distance of d from each other as shown in figure 10.2. Let the force of attraction between the two objects is F. According to universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. That is, F is directly proportional to product of m into m. यहाँ पे ये जो symbol है directly proportional का, I think they have missed, right? So why the students are dropping off, I don't know. All right. And the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब F is inversely proportional to d square. ठीक है. Now combining equation 10.1 and 10.2, we get F is proportional to m capital M into small m divided by d square. और F is equals to, जब भी हम proportional या फिर inversely proportional की बात करते हैं, so there is always a constant, right? So वो जो constant in this case is, that is G, where G is the constant of proportionality and is called universal gravitational constant or universal gravitation constant. By multiplying crosswise, we can get F into d square is equals to G into capital M into small m. तो इसके बेसिस पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, but for now just remember this formula. The SI unit of G is obtained by substituting the units of force, distance and mass, that is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, अभी ये मैं इसको पर किलोग्राम स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो किलोग्राम स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में आएगा, बट इट हैज बीन टेकन टू द न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई इट शोज एज kg raised to the power -2. Okay, so the value of G was found by Henry Cavendish, and he lived from 1731 to 1810.
So by using a sensitive balance, the accepted value of G is 6.673 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square plus kilogram square. ठीक है. We all know that there exists a force of attraction between any two objects. Compute the value of this force between you and your friend sitting close by. Conclude how do you experience this force. Now one more thing I would want to discuss with you, that since this is universal gravitational constant, ठीक है, कैपिटल जी है, तो दिस इज यूनिवर्सल, मतलब इट्स वैल्यू विल बी सेम अक्रॉस द यूनिवर्स. आप कहीं पे भी जाओ, अगर आपको जी की वैल्यू चाहिए, सो इट विल बी दिस मच ओनली, 6.673 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, तो यही वैल्यू रहेगी. नाउ स्मॉल जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हियर इज वन एग्जांपल. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. सो सी, ओके, एग्जांपल जो है वो हम बाद में करेंगे. बिफोर दैट विल जस्ट डिस्कस अबाउट आइजैक न्यूटन. सो आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन वुल्सथॉर्प नियर ग्रैंथम, England. He is generally regarded as most original and influential theorist in history of science. Okay, okay, how the value of G was derived. Okay, that's a really nice question, but I don't think that is given in our book. But if you're really curious about this, I will 100% find this out for you. But maybe this calculation may be, very complicated. That's why it is not given at this level. आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो ना, तो 9th स्टैंडर्ड में वो सी, जब आप 5th में रहते हो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मिलता है, उसके बाद में आप 6th में आते हो, आपको थोड़ा सा डीप में कंसेप्ट समझाया जाता है. आप जब जिस तरीके से आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, उसी तरीके से आपको सी, आपने देखा होगा कि आपको 5th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर है, 6th में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है. ऐसा क्यों है? एक ही अगर एक ही क्लास में रहेगा तो चलेगा नहीं. सो वाई, ये क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती है, उस तरीके से आपको उतने डीप में वो कंसेप्ट समझाया जाता है. ठीक है, सो मे बी द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल जी इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर योर लेवल. मतलब अभी आप जो 9th स्टैंडर्ड में हो, तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू. इट मे बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट. बट इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, आई विल गो थ्रू इट, अगर मुझे मिलता है, जो कि मिलेगा. एंड इफ इट इज simple for us, then I will discuss it in the class. Otherwise just leave it for 10th 11th और 12th. ठीक है, आपको 10th में सीखने को मिलेगा, या फिर 11th में, या फिर 12th में. How does that sound? ठीक है, yes, no, but I like your question, I like your curiosity. Okay, चलो ठीक है. So he is generally regarded as the most original and influential theorist in the history of science. He was born in a poor farming family, but he was not good at farming. ठीक है, so he was sent to study at Cambridge University in 1661. मतलब उनका जो बर्थ हुआ था, that was in 1642, 1642 में हुआ था. एंड ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1661, दैट मीन्स एट द एज ऑफ 19. In 1665 a plague broke out in Cambridge, so न्यूटन टुक अ ईयर ऑफ. जैसे हमारे यहाँ पे कोविड आया था ना पिछले 2 साल में, सो ऑल ऑफ अस हैड लॉन्ग हॉलीडेज. आपके जो अगर पिताजी माताजी काम करते हैं कहीं ऑफिस में, सो उनको भी हॉलीडे था, उनको भी वर्क फ्रॉम होम था. आपके जो स्कूल्स थे वो भी क्लोज थे, राइट, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. सो सिमिलरली प्लेग जो है वो ब्रोक आउट हो गया था कैम्ब्रिज में एट दैट टाइम. और तब न्यूटन ने 1 साल का ब्रेक लिया था. ओके, सो he took a break of 1 year. It was during this year that the incident of apple falling on him is said to have occurred. मतलब जब वो 1 साल का उन्होंने ब्रेक लिया था, उसी दौरान
वो जो इंसिडेंट है एप्पल फॉलिंग वाला, वो हुआ था. Okay, what happened after that? This incident prompted Newton to explore the possibility of connecting gravity with the force that kept the moon in its orbit. This led him to the universal law of gravitation. It is remarkable that many great scientists before him knew of gravity but failed to realize it. Now, see, this is very interesting line. कि न्यूटन से पहले भी कई सारे लोगों को पता था कि ग्रेविटी नाम का चीज एग्जिस्ट करता है, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट नेम कि इसको ग्रेविटी बोलते हैं या फिर लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है कुछ तो है दैट दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. ये सबको पता था, पहले से पता था. अगर नहीं होता, लाइक सी, अगर आप बात करोगे दिस इज 1642, राइट? तो कुछ कुछ अगर आप किले वगैरह देखोगे तो उसमें लाइक कैनल्स वगैरह बनाए हैं, सो ऊपर से पानी नीचे आएगा. सो हाउ दे नो, मतलब उनको कैसे पता कि पानी नीचे ही जाएगा? पानी ऊपर भी जा सकता है, लाइक बट दे वर श्योर कि पानी नीचे ही जाएगा. सो उसी तरीके से कैनल्स बनाए गए. तो मतलब उनको भी पता था कि अगर ऊपर से कोई चीज अगर आप छोड़ोगे तो वो नीचे ही जाएगी, राइट? इफ इट इज वेदर इट इज वाटर और एनीथिंग. तो ये चीज पता थी, लेकिन किसी ने इसे नोटिस नहीं किया कि क्या है ये चीज. बट न्यूटन नोटिस्ड इट. न्यूटन ने नोटिस्ड इट कि यार, मतलब अगर ये एप्पल नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? मतलब न्यूटन से पहले भी कई बार एप्पल गिरा है और उनके बाद में भी कई बार गिरा होगा, राइट? बट नोबडी think like him कि क्यों गिरा. So that was the thing that made us learn one more chapter, maybe two more chapters. ठीक है, तो एक एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा था और हमको दो एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ने पड़ रहे, राइट? यही प्रॉब्लम है. ओके, so Newton formulated the well-known law of motion. He worked on theories of light and color. He designed an astronomical telescope to carry out astronomical observations. न्यूटन वाज ऑल्सो अ ग्रेट मैथमेटिशियन. देखो मतलब उन्होंने कितना सारा काम किया है, सिर्फ दो चैप्टर ही नहीं बढ़ाए हैं. ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क. उन्होंने लॉज ऑफ मोशन बनाए या फिर लॉज ऑफ मोशन डिफाइन किए. सो ही ऑल्सो वर्कड ऑन थियोरीज ऑफ लाइट एंड कलर. उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी डिजाइन किया था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करने के लिए, right? He was also a great mathematician. He invented a new branch of mathematics and called it, that is called as calculus. तो calculus भी आपको सीखना है अभी. calculus आपको 11th 12th में आएगा, 10th में आपको calculus नहीं रहेगा. सो मतलब आपके कई सारे चैप्टर्स जो है इन न्यूटन महाशय ने बढ़ाए हैं. ठीक है, कैलकुलस तो बहुत मुश्किल मतलब लगता है लोगों को. वाई जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. श्वेता, we just discussed that, right? Let's be on this topic, and we can discuss that later on. Okay, so Newton transformed the structure of physical science with his three laws of motion and the universal law of gravitation as the keystone of scientific revolution to the 17th century. Newton's work combined the contributions of Copernicus, Kepler, Galileo, and others into a new powerful synthesis. It is remarkable that though the gravitational theory could not be verified at that time, there was hardly any doubt about its correctness. This is because Newton based his theory on sound scientific reasoning and backed it with mathematics. मतलब उस समय जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट रखा था, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई दैट. बट लेकिन उसके करेक्टनेस में कोई डाउट था भी नहीं, लेकिन आज भी नहीं है, राइट? व्हाई? बिकॉज जब उन्होंने ये सिद्धांत दुनिया के सामने रखा ग्रेविटेशन का, सो ही हैड समथिंग टू बैक. मतलब उनके पास साइंटिफिक रीजनिंग थी, उनके पास मैथमेटिक्स था उनकी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, राइट? सो दिस मेड द थ्योरी सिंपल एंड एलिगेंट. These qualities are now recognized as essential requirements of a good scientific theory. मतलब अगर आपको आज की दुनिया में कोई भी खोज करनी है, कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है, लाइक यू हैव टू इन्वेंट समथिंग, यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट विथ scientific reasoning and mathematics, right? Then and then the world will appreciate that.
Okay, so how did Newton gauge the inverse square rule? So let's keep this for next class. Maybe I know this has been only about 35-40 minutes, but I think this will be enough for today. And remaining topics we can discuss in the next class. So please don't leave the class before I ask you to leave. Okay, so we'll discuss two points in the next class. First one is how the value of g was derived. That is the first one. If possible, we can discuss that. And the second one is why g is called the universal gravitational constant. Not only this topic itself, but we will revise all the topics so that it will be covered as well. Okay, so that's it for today, students. I hope you got to learn something. Okay, it was very in I was very happy with you all responding in the chat box and asking questions. I like it. Please keep yourself active, keep asking questions. And yeah, I will see you in the next class on next Friday. Till then, take care and bye bye. And students, I declare this class has ended and you all are free to leave this class. Bye bye. Yeah, bye bye everyone. You are free to leave this class. You can leave this class now. Yeah, bye everyone. Prisha and Shweta, please leave this class.